सब्सक्राइब कीजिए द एंड्रॉयड गाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। है क्योंकि इसमें डुअल चैनल बनाया गया है। वाटर कूलिंग देख सकते हैं, 8GB लाइट उसमें दिया गया है। इस बोर्ड में लगाया गया है इंटेल का i7 8th जनरेशन। इसका जो कैबिनेट है वो एंटेक का RGB रेनबो कलर का कैबिनेट दिया गया है, जिसमें आपको साइड पैनल ट्रांसपेरेंट मिलता है। आप देख सकते हैं कैबिनेट बहुत ही अच्छा है। बोर्ड में आपको लाइट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस तरह से आपको एक पूरा पीसी बिल्ड देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं बोर्ड का लाइट और रैम का लाइट RGB है, बट इसमें बोर्ड में आपको RGB लाइट नहीं देखने को मिलता है। कांस्टेंट रेड इसमें आपको ब्लिंक जलता रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं HyperX का रैम लगाया गया है। देख सकते हैं बोर्ड पे ऑरस का लोगो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड में एक चिपसेट दिया गया है। ये ऑडियो को बेटर करता है। AMP UP ऑडियो के लिए एक चिपसेट दिया गया है। गाइस ये यहाँ पे आप केबल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया है शॉपकीपर की तरफ से। सो ये कैबिनेट जो बनाया गया है ये सिर्फ एडिटिंग के लिए किया गया है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading